Ladies and gentlemen, time now to take a plunge into the first session on leveraging FPOs to change the agri-marketing landscape in India. पिछले कुछ सालों में एफपीओ ने लंबा सफर तय कर लिया है और वे आज तेजी से भारत में एग्री वैल्यू चेन के क्रिटिकल पार्ट बनते जा रहे हैं। कंसिस्टेंट क्वांटिटी और क्वालिटी का माल सप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड बायर्स से बात करने, एक्सपोर्ट मार्केट के एफपीओ तक पहुंचने और ई मार्केट्स में ट्रेंडिंग करने तक वे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की तस्वीर रीडिफाइन कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, in this backdrop, the session shall surface experiences of FPOs and embark on exploring the untapped opportunities with the industry leaders. We welcome Mr. Shishir Sinha, Senior Deputy Editor, Hindu Business Line. I'm happy to share that, sir, having worked as a business journalist for last 26 years, Mr. Sinha is presently working as Senior Deputy Editor with the Hindu Business Line. From writing in various government publications to regularly appearing as an expert on Doordarshan, Sir is today going to steer this session as the moderator. With these words, may I please hand over the session to you, sir, and request you to please welcome and introduce our eminent panel. Over to you, Mr. Shishir Sinha. Thank you. Thank you, Minal, and namaskar to everyone. It's always a pleasure to talk to people who are actually what we call as the real economy. That's a Bharat, people from Bharat. We are going to talk to people from Bharat. और जैसा कि मिनल आपने कहा कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जब 2020 में जब इसकी शुरुआत की गई थी और कहा गया था कि 10,000 के करीब में हमें एफपीओ सेटअप करने हैं, and today the number is almost, if we talk about the number which have been allocated, it's something around 4,965, and out of that 1,762 have already been registered. The basic concept behind this FPO is जिसको हम लोग कहते हैं एक जिला एक उत्पाद, one district one product concept. और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग कहते हैं कि देश में 86% यानी कि 86% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए हम किस तरीके से मार्केटिंग हम आसान कर सके, हम उनके लिए किस तरीके से उनके प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचा सके, और जो कुछ भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी लागत को कैसे कम कर सके. There the FPO plays a very big role, and also we also have to think about the producer companies, the PCs, which are involved into the entire chain, into the entire process. So today we have eminent personalities. Let me introduce each one of them. Mr. Amit Napade. He is the Chief Executive Officer of Krishi Vikas wa Gramin Prashikshan Sanstha. Then Mr. Chandrasekhar S. He is Business Head Spices Olam India. Mr. Rohit Mani, he is from Bayer. Then Mrigank Paranjpe, he is MD and CEO NEML. अमित सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, चूंकि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि एफपीओ के साथ, जैसे हम कहा जाए कि एफपीओ के रूप में है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंड व्हाट नेक्स्ट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस एंटायर प्रोसेस? धन्यवाद शिशिर जी, और सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना सारा बिजनेस जो है खुले आसमान के नीचे करता है, और वो अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क लेके चलता है। हम ये भी जानते हैं कि जिस बिजनेस में रिस्क ज्यादा है उस बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे किसान का अगर हम इनकम देखते हैं तो इट इज लेस देन 10,000 पर मंथ। तो ये सब जो कंट्रोवर्सी है, ये सब देखते हुए अगर हम किसानी की तरफ एक देखते हैं तो किसान के हाथ में कुछ चीजें हैं, उसमें है मेहनत करना, लेकिन किसान के हाथ में कुछ चीजें नहीं है, वो है नेचर और मार्केट। तो नेचर तो ठीक है, उसके लिए क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए भी अलग अलग तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है मार्केट। मार्केट में हमने देखा है इस साल सोयाबीन 4,000 भी बिका, वही सोयाबीन इस साल 10,000 बिका है।
मार्केट में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने दलहन क्रॉप के लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स उठाए थे, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में उसके विपरीत निर्णय ले लिया। तो ये सब फैक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं ये किसान की मर्यादा के बाहर है, और उसके वजह से मार्केट में किसान को अच्छा रेट मिलना, ये जब तक नहीं होता है तब तक हम किसान की भलाई के लिए बहुत कुछ नहीं सोच सकते। वो बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में अगर हम सोचते हैं, पिछले इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, तो मार्केट रेट को लेकर हम काफी मतलब कंफ्यूज थे कि कैसे किसान को हम आश्वस्त करें। तभी हमें एक ऑप्शन मिला, फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में हमने देखा है कि किसान जब अपने क्रॉप की सोइंग करता है, उसी वक्त उसको पता चल सकता है कि 3-4 महीने बाद उस कमोडिटी का रेट क्या होने वाला है। मार्केट शायद फ्लक्चुएट कर जाए, लेकिन वो अगर वायदा करता है तो वो वायदा करने से उसको रेट, एश्योर्ड रेट मिलेगा, ये कंफर्म हो जाता है। और वायदे बाजार में, या वायदे बाजार से आगे, फ्यूचर मार्केट से आगे भी जाके एक बहुत अच्छा पर्याय सेबी ने लास्ट ईयर दिया था, वो था पुट ऑप्शन का। पुट ऑप्शन किसान के उत्पाद के भाव का एक इंश्योरेंस था। और जिस तरह से मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रयास किए, उसी तरह से पुट ऑप्शन प्रमोट करने के लिए भी सेबी ने बहुत अच्छा प्रयास शुरू किया था, जो कि किसानों ने और एफपीओ ने काफी अच्छा वेलकम उसका किया हुआ था। फ्यूचर मार्केट में या पुट ऑप्शंस में जो भी साइज चाहिए, लॉट साइज चाहिए, वो लॉट साइज शायद एक किसान के लिए पॉसिबल नहीं थी, वो लॉट साइज एफपीओ के माध्यम से पॉसिबल हो रही थी। तो एफपीओ काफी इंटरेस्टिंगली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस एफपीओ का रहा। और जो एफपीओ पायलट में थे, उनका अनुभव सुन के काफी एफपीओ भारतवर्ष में तैयार हो गए थे कि चलो इस एक्सपेरिमेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से निर्णय आ गया और सेबी ने कहा कि इसमें से चना और कुछ सरसों वगैरह और कुछ कमोडिटीज बाहर कर दी गई है। तो ये बहुत ही शॉकिंग था जब लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, एफपीओ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ खामियाज है, कुछ दिक्कतें हैं, तो सेबी ने जरूर सारे स्टेक होल्डर्स जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में है उनके साथ इसे डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि स्टेक होल्डर्स की भलाई के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो स्टेक होल्डर्स का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें अच्छी तरह से रहेगा, इनपुट अच्छी तरह से आएंगे, ये हमें लगता है। और एफपीओस के माध्यम से ये लॉट साइड का मैटर अगर सॉल्व हो जाए और किसानों को हम एक एश्योर्ड रेट ऑफर कर पाए फ्यूचर और पुट ऑप्शन के माध्यम से, तो मुझे लगता है इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इस अवसर पर मैं ये आग्रह करना चाहूंगा गवर्नमेंट से, और अपील भी करना चाहूंगा कि जरूर वो फिर एक बार इस विषय पर सोचे। हम चाहेंगे कि कॉटन के रेट में भी काफी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, अलग अलग कमोडिटी के रेट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फ्यूचर मार्केट और पुट ऑप्शंस में ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज को कैसे लाया जाए, इस विषय पर हम सारे लोगों ने और गवर्नमेंट में विचार करना चाहिए। और अभी फिलहाल हमने जो भी एग्रीकल्चर लैंडस्केप देखा है इंडिया का, मुझे लगता है मार्केट के लिए एक ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो आसानी से किसान को एक एश्योर्ड रेट प्रदान कर सकता है। ओके, अमित सर, हेलो। I hope we'll be joined soon once again by Mr. Shishir Sinha. And until then, may I please take a moment to extend a very warm welcome to Mr. P.K. Swain, Additional Secretary, who is here amidst us. A very warm welcome to you, sir. And requesting Mr. Sinha to please take over as we've just welcomed Mr. P.K. Swain, sir, या to steer the session. Thank you.
Ladies and gentlemen, just trying to sort this technical issue out. And if I may just take a moment to share that Mr. P.K. Swine, Additional Secretary, Ministry of Agriculture, has steered a lot of marketing initiatives in terms of scaling up various projects and marketing efforts like the ENAM. And sir, if we may please request you to kindly share your insights and perspectives on this session on leveraging FPOs to change the agri-marketing landscape in India. Spencer, you're Audible now? Am I audible? Yes, sir. Audible now. Thank you, Minalji. It's a pleasure to be always associated with CII and their intellectual sessions, which they always provoke everybody to come up with novelty. Thanks to CII, Madam Mitu Kapoor, Roli, and others for inviting me. And let me also, first of all, extend a very warm welcome to all the panelists, including Mr. Amit Chandrasekhar and others from various walks of life, very esteemed speakers and all. It's a privilege to talk on FPO all the time because it has become a kind of symbol for agri-marketing in India today, a very progressive symbol. Let me first of all express this because earlier it was collectivization, today it is FPO. I mean, I'm defining those terms from cooperative to collectivization to FPO. They are all almost all in the similar vein, but there is a difference in the approach. When I speak about this, when actually we are looking into Indian scenario, when you are looking into Indian scenario, you realize that the small farmer is not able to deal with the market. But yet, there is a demand side which is huge. That's a domestic demand side. So that means the price that the farmer is getting in the consumer's price is very, very low. More the water content in the system, I mean the commodity, lesser is the price share of the consumer. That's a price spread that I'm talking about. That means the wastage, the change of the hand, the intermediation numbers, that changing dynamics. So obviously, if you have to look at the welfare of the farmer, without that, of course, agriculture cannot prosper. It is a fact that landholding size is reducing because of the increase in the numbers. So obviously with that, we have to improve the productivity. We have to reduce the post-harvest losses. We have to improve the market access from the production end so that the consumers also get the benefit of what is being produced in terms of quality, quantity, and the right time and the right place wherever they want. Whereas the farmer should get the right kind of price for his harvest for the decisions that he has taken. But how is that possible? If you look at the development, yes, probably in the Western Europe, we find the cooperatives have been very strong. They have been going strong. And we realized that when you looked at the Asian region, there was a kind of collectivization from one village, one product to one tambo, one product, or one city, one product. So obviously, when you looked at that, we realized that Indonesia is no different from us in terms of the landholding sizes or even China. But then how they are doing that through aggregation. So we are looking into this when all the possibilities of a cooperative, of course, clusters in terms of organic farming, then you realize that probably if there is an organization which is more professional and driven by the farmers, by their own decision, where they participate democratically and in a cooperative spirit, so that will quite a bit help, whereas the market probably can come to their doorstep. That's a possibility. So when we started looking into this, we realized that in India, there is a good alternative to even cooperatives. So that is where the FPO concept came in, which inbuilt both cooperative as well as the company's regulatory framework to get into this for economy of scale,
for improving bargaining powers, providing a good access to the market. So that is where I was working on that 10,000 and promoting formation and promotion of the 10,000 FPO scheme came into our head, and I worked on that particular program to develop that scheme for India. But having said this, we realized the path is not easy. There is certain conditionality for them to succeed on that path. But if those conditionalities can be taken care of, definitely the FPOs can be a big force in terms of, it's a win-win situation for the companies, the aggregators, because the cost of aggregation will come down if they directly deal with the FPO. For the consumers, the price will be coming, will be lower, while better quality will be available at the right time. And when it comes to the trade, whether it is domestic or international trade, so obviously for the trade also, it is a good win-win situation. I've just come back from Dubai Expo leading the delegations. We had a lot of meetings with the importers there, with our exporters, we had with our startups for the investment in that area, for our machinery manufacturers. I realized that people are looking at India as a model whereby this FPO is being talked about. Clusterization and FPO is being talked about. It was quite a surprise for me because we thought we are developing within India, because the importers there are looking at our FPO development so that they are able to procure various kinds of GI products, agricultural produce from different parts of India, whether it is queen pineapple from Tripura, which now they are not able to do. They will be able to do that, or whether it is a Johar rice from Assam, or it is a saffron from Kashmir, or even the almonds from Kashmir, or even white lobia from Uttarakhand. I think there is an awareness outside, but the procurement cost for them is too high. So they are asking us about this FPO scheme and how to really go about to meet them, to work with them, to help them to aggregate, to be in touch with the FPO. So obviously for the outside trade, they're looking at that aggregation in India very clear. So that is, and when you are looking at the Indian market even, we realize that our companies are also looking at that, lowering the cost to become the cost competitive. Whether it is direct table varieties, whether it is processed varieties, we need to come down with the cost. We need to improve our processing also. So that is possible with the FPO. We, in fact, while designing this ENAM, even we realized that the access, when we are actually providing to the small and marginal farmers the access through ENAM, we hit upon this idea that if the FPOs are also allowed, because there is a certain resistance within the APMC, when the FPOs get into the APMC markets. So we realize that if we provide a kind of FPO module and then allow them to trade from the FPO collection center without coming to the APMCs even, but having all the ingredients of the APMC, virtually creating the APMC filling at the FPO module and allowing all the traders of all the APMCs to take the bid, then that will virtually change the game. And then at that point, we realize that the FPOs are very gung-ho about this, and more than 1,800 FPOs were immediately, I have not seen so much of enthusiasm in the FPO to join that ENAM as it is today, because they find the cost reduction is easy and accessing the market, it is easy. And for the other side, they find that the bid that they have to take to get that is much lower, because the intermediation cost comes down, because the FPO collection centers are the village heads, where the FPOs members can bring it after the harvest to that some of the closest point without traveling all the way to the APMC. As you know, the APMC densities in India is quite high. Almost 470 square kilometer each APMC. That means 25 kilometer almost length they have to travel. So if they are doing now in the FPO collection center, they can definitely, reduce that gap, transportation cost easily, and the hassle of all intermediations. So given this, we are realizing that the FPO is, and for the processing even, because India needs a lot of value additions, which is very, very difficult by the small and individual farmers to invest in the infrastructure in that large scale at the farm gate to do that initial value addition, because initial value addition, something like cleaning, grading, processing, increases the shelf life and the value of the produce. But that is possible when certain amount of investment has to be done in the farm gate. Given this, we realize that the FPO as a collectivization
can work as the custom hiring center. They can also work as the common facilitation center, that is for the harvest and post-harvest, whereas the cost of the technology and infrastructure will come down drastically for each of the member in the production and harvest cycle. So given this, while the FPOs can very well give access to the technology, high technology, because today there is a need for inducting high technology into India to move up in that productivity graph. Because if you look, we might be second largest in terms of food grains, we might be second largest in terms of fruits and vegetables, we might be number one in terms of certain commodities like mango, banana, and other things. Mango, we have 45%, banana, we have 26% of the globe. Like this okra, we are the number one. But then question is that when you look at the productivity, we are still yet to bridge that gap with the world average. So how is it possible? That is FPO again, where the extension mechanism, collective extension mechanism, good agricultural practices, access to technology, access to better import, that is facilitated through the FPO cycle. And similarly, common harvesting and marketing. So that is how the FPO scheme is going to be a game changer. Now, of course, I find that even the commodity exchanges are inviting FPOs to trade on futures and put and call options. So, of course, that is a second level of maturity when they come to that. Our first is that the spot market where the FPOs, first of all, can give it's a low-hanging fruit where they can really give a lot of benefits to the farmer members immediately, because who do not have a holding capacity. So the FPOs can create warehouses, FPOs can create value addition infrastructure, FPO can back end provide better input. And if you have a look at the Price Waterhouse Cooper study of the Maharashtra, project, MSCP project, Maharashtra Agriculture Competitiveness Project of the World Bank, they have very clearly brought out that that study has very clearly brought out that there is a cost saving in terms of marketing by the FPOs very clearly, and whereas both in terms of input marketing and output marketing, which is a very good thing because they are able to do the collective input marketing to reduce the cost, input and other. There is a better credit accessibility with an average of about 40 lakhs credit facility for each of the FPO. And even the better marketing facilities, value addition facilities, that study has very clearly brought out. Even thereafter, even the National Institute of Agriculture Marketing had done a study, Jaipur. So they also brought out the similar kind of findings with the FPO. So given this, these are only some of the FPO. There are now a good number of literatures which have come up that how FPOs are transforming that agri-space market very clearly. I really saw in Dubai, even the Sahagri is a well-known FPO in there for dealing with for like pomegranate, tomato and other issues, because the cost they are able to reduce, they are able to process it well, they are even able to link overseas very well, the logistic cost is reduced, they can provide a better logistic cost both within domestic and outside. So given this, so the canvas is very large for our FPOs. Government through the schemes, you might have heard about equity grant they are providing to strengthen the FPOs. Credit guarantee fund has been established to provide that. And the training and handholding, which is very, very important, has been being given in very specialized issues from management to accounting to processing to good agricultural practices to overseas marketing. So government is very keen on providing those handholding to the nodal organizations. And even there are promotions of very specialized FPOs, such as honey, that is beekeepers FPO under this scheme, because honey is coming up as a big portfolio. Then organic produce, for which India is exporting more than 50%. So we are now promoting very exclusively FPOs for organic produce, different types of organic produce like millets and other organic produce, fruits and vegetables. They're producing, who are also now able to under our schemes, they're able to now export. And beyond this, even now we have ventured into getting into bamboo, because as you know, bamboo is a good, has a good economic value world over. Though we are the second largest producer of bamboo in the globally behind China, we have not entered into that export market. Whereas China and Vietnam being third, they are dominating that export market.
So we have now ventured into about 40 FPOs in the bamboo sector to give them a kind of the farmers to get that benefit of the bamboo, both in terms of value additions, and second is that it will help as a good carbon sequestration process for us. So we have entered into that event. So we are actually getting into different specialized commodities with FPO, realizing that the FPOs can transform this agri space, agri canvas into a beautiful, productive, and very profitable venture. And even we realize that the startups ecosystem which is coming up now, they are also encouraged to deal with the FPOs more and more. The startup to breeze their, to understand their need, to connect them through technology to the market, and so on and so forth, value additions, etc. So the opportunities are quite huge. So I wish this session all the best, and I'm sure that the FPOs who must be participating will profit out of this seminar of CII. And I've seen all the participants, all these esteemed speakers will bring value to these sessions, and I wish you all the best for this. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for giving such a comprehensive detail about the FPO thing. And if I take one line from your statement, that canvas is very, very big. That is the most important thing. And इस पूरे कैनवास को हम कैसे यूटिलाइज करें, इस पूरे कैनवास में हम अपने आप को और कैसे बेहतर बना सके. Let me invite Mr. Chandrasekhar, who is the business head of spices from Olam, India, and I will request him to talk about what next his company is planning to do for the FPO. Mr. Chandrasekhar, please. Good morning, all. So when you look at ये जो FPO के लिए Mr. Swain जो बात कर रहे थे, and where we are coming in from. So Olam as an organization and many other organizations like us are present both in large volume commodities like rice, wheat, cotton, kind of bulk volume commodities, and then we are also present in niche commodities like spices, cashew nuts, जिसमें ज़्यादा volume नहीं होता है, but then there is more value addition possible in these commodities, and they are relatively lesser produced commodities compared to the bulk volume commodities. हम दोनों sectors में we are present, and our experience, we have been participating in this space, working with FPOs in different regions of the country, in different crops, and it's an evolution. हम लोग समझते हैं कि evolution है overnight. As large organizations who are present in this space, we do not expect that things will just change drastically overnight, but it's a process of evolution, and where we see that हम लोगों को भी इसमें invest करके we have to stay invested in the space for a longer term benefit. And जैसे कुछ examples मैं बताऊं, अगर हम लोग spices की बात करें, जहां हम लोग export में हैं, we export the product, and दुनिया भर में अभी क्या है, food safety की जो stringency है बढ़ती जा रही है, including India, globally also. Food safety के लिए जो pesticides के ऊपर है, allergens के ऊपर है, इन सब में, या इवन साल्मोनेला, इन सब के ऊपर जो फूड सेफ्टी की जो अवेयरनेस है ज्यादा हो रहा है, और इसके लिए जो कस्टमर्स है मांगते हैं, एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन दीज कंट्रीज आर आल्सो आस्किंग फॉर स्टैंडर्ड्स, एंड इसमें FPOs can become a beautiful opportunity for companies which want to produce products which are suitable. जहां हम लोग इन FPOs के साथ आज फिलहाल हम काम कर ही रहे हैं, already we are working with some FPOs where we work with them, identify the product which needs to be done, क्या करना चाहिए, कैसे support देना चाहिए, so in terms of agronomic practices, gap, good agricultural practices, इन सब के लिए जो we educate the FPOs as well. They also have in their CEO and board of directors agri graduates, so वो भी समझते हैं इन चीजों को कि क्या करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, and that helps in actually trying to then arrive at products which are more market oriented and customer oriented. And जैसे हम इन सब चीजों में इन्वेस्ट करेंगे as FPOs, as organizations, जो मार्केटिंग की जो बात पहले कही गई थी, वो actually will become relatively easier. Because you are producing to what the market wants, rather than आप जो produce कर रहे हो कि market जो भी भाव है खरीदे, आप customize कर रहे हो product को, and मेरे हिसाब से जहां ये niche commodities है, definitely customization to the market needs definitely will play a larger role. Second जो बात है, अगर बात करें कि even in the bulk commodities, जो basic value addition है, I'm not even getting into processing, higher level processing, but जो basic value addition, things like cleaning,
pre-processing, and even post-harvest management of the crops. क्योंकि बड़ा जो आज इशू है, किसान प्रोड्यूस कर देते हैं, अच्छा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, बट जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, there are many lacunas there. So how do you really help the farmer, be it in terms of the basic drying capabilities, so that the moisture is controlled, उसकी वजह से mold growth ना हो, and therefore the product becomes better. So these are things with some crops, there is definitely an opportunity for us to work. And already with the government grants, which Mr. Swain also mentioned, a lot of investments are coming in. मेरे हिसाब से I think अगले 2-4 साल में ये there is a lot of progress which is possible as corporates also, we also stay invested. And last point, if I just have to add one more element, today if you look at it globally, जो talk of the town or the priorities of most of the segments are about sustainability and traceability. जो कंज्यूमर है वो जानना चाह रहा है कि मेरा खाना कहाँ से आ रहा है, कौन सी गांव से आ रहा है, कौन सा किसान प्रोड्यूस कर रहा है, to that extent they want to be aware, क्योंकि they want to be good for the society. And global emissions, all these are going to be things which are going to lead to more and more traceability. And these FPOs are in the right space in terms of giving that visibility to buyers and end consumers. So इसको leverage करने में भी हमको, I think overall over the next few years we have to build that capability, that how do we really bring in the sustainability angle to the produce. Zero budget natural farming, Prime Minister has been talking about it. So वो भी एक concept है. FPOs can look at adapting. None of them are easy. It's going to take time. It's going to इसमें evolution होगा. ये नहीं कि सारे crops में हो सकता है कि नहीं हो सकता है. Some crops में होगा, कुछ में नहीं होगा. But adapting these kind of practices and working with these buyers, definitely we see that opportunity for more success in working with FPOs from buyers like us will work. So we see that staying invested, staying on course, handholding are things which we will have to do, so that over a longer term we have definitely better progress. Thank you. Yeah, thank you, Mr. Chandrasekhar, for giving a perspective from the output kind of view. And now let me move to the input part, from the seed, from the output to the input one. And Mr. Rohit Maini, who is Grower Engagement Lead India, Bangladesh and Sri Lanka, is from Bayer Crop Sciences Limited. Mr. Maini, what your take, what's your plan for the future? What Mr. Chandrasekhar was talking about hand holding, he was talking about customization, he was talking about sustainability. So what kind of role you are going to play there? So thanks, Shishirji, and I would start by comments which were made by Swainji. Yeah, he said that a new canvas is being painted now, and I would say that it's a canvas which has a fresco now, fresco of different commodities, frescoes of different markets. Yeah, so all those things merging together to make a very nice painting. So that's where we are, and I liked what comments made by Chandrasekhar ji on the sustainability part as well. So what role we are playing as a buyer? So see, first of all, we at Bayer, we are committed for improving the livelihood of 100 million farmers across globe by 2030. And major part of this 100 million is going to come from the Asia. And there are several programs which are going on towards benefiting the smallholder farmers. So one area is that we have taken an initiative 2.5 years back by framing up a grower collective program in which we are actually bringing in a lot of companies together. See, the problem, Shishi, today is that we talk about that we are bringing the value chain to the FPOs, but the important part is that there has to be some convergence of this value chain at some particular level, and this is the convergence on which we are working on. We are bringing like partners like Bank of Baroda, TCS, IFC, Nagarjuna, Covestro, and Farmgate together, and doing work around the main challenges which have already been talked about. I will not say it again, but problems like business planning and strategy,
part which is being done at an FPOs, whether that is done, whether FPOs know that potential exists in terms of today we see the input and output is only close to 5% part of that aggregation which happens to an FPO. So that is something which is very critical. We are bringing in over there digitalization in terms of doing day-to-day operations. Yeah, effective communication with the shareholder farmers is something which we are bringing through this collective program. The linkages which we are doing, yeah, where globally we are working with a lot of food chain partners. In India, we are working with approximately 75 different food chain partners, whether it is in exports, processing, or into the retail industry. Wherein what Chandrasekhar was talking about, yeah, that visibility or the transparency onto where the food is coming and what is being used onto the food which they are eating. So that's where we are bringing a lot of know-how and knowledge, what to use and when to use. So that's where we are actually working a lot of, like an example with the grapes. Yeah, Sahyadri, we are working in terms of what MRLs would be needing into the export market into different parts of the world. So that's where we can bring this know-how to across commodities which can be planned for the exports, and that's where we are working with a lot of FPOs as well. Skilling is one part wherein finance to governance training to FPO management for the efficient functioning of the producer organization. Educating member farmers to adopt the best practices and increasing their farming income. Something skilling along with an IFC we are bringing about this solution. So these are something which this value chain convergence is something which we are actually strongly leading the whole show over here. And today we are in connect with almost more than 1,000 FPOs across the country. And what we have felt as in working ground for the last 2 years around FPOs is that, see, most of the FPOs are at the aggregation level is very low. And that's where we are working on a cluster model. We are actually making clusters of FPOs, approximately 6 to FPOs coming together. And it provides a serviceable scale for the value chain partners which we are talking about. Yeah, direct linkages is something in model which we are also seeing that, okay, there is a distribution layer and retailer layer in between. So if we have a direct linkage with the FPOs, yeah, it would become more competitive. Direct business relationship with manufacturers will help to support FPOs to address the queries of the customers. Service models, drones along with the inputs and all is something which we are also thinking with the few FPOs where government has quite proactively taken a lot of measures in terms of subsidizing, creating rural entrepreneurs and all. So that's where we are encouraging people from the FPOs to take up this entrepreneurship, and we are going to support them over there. So these are the few areas where we see that, Shishi, that there's a lot of change happening, and I see this step of government as a landmark step in changing the whole agri landscape for the country. थैंक यू मिस्टर मैनी एंड मैं अगर स्वयं साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, इसके पहले मैं अगर परांजपे साहब को आमंत्रित करूं, उसके पहले मैं प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के जिस रिपोर्ट की बात की गई थी उसमें 3 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण थे जो महाराष्ट्र में स्टडी की गई, और उसमें ये पाया गया कि जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के थ्रू जो रियलाइजेशन है वो लगभग 22% बढ़ा है। और अगर मैं इंसिडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग की बात करूं तो लगभग उसमें 31% की कमी आई है, 31% की कमी आई है। और जो मेंबर्स हैं जिन्होंने जो प्रोड्यूसर कंपनीज है उनसे परचेज किया है उसमें 28% लोगों ने परचेज करी, और उसमें उनका सेविंग अराउंड 1384 पर एकड़ था। ये सुनने में आपको लगे कि 1384 रुपए क्या होते हैं, लेकिन अगर एक फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये रकम काफी महत्वपूर्ण रखता है। अगर हम इस पूरे चेन की बात करें, मैनी साहब ने वैल्यू चेन की बात करी, और इस वैल्यू चेन में एक प्लेटफॉर्म की भी जरूरत है जहां पर बायर और सेलर दोनों जो है वो आए, और वहां पर क्या भूमिका है एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सिस्टम की। आई थिंक मिस्टर परांजपे इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। मिस्टर परांजपे, प्लीज, व्हाट्स योर प्लान फॉर improving the value chain system in the FPO? धन्यवाद शशि जी। पहले तो एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। अभी हुआ है हमारे यहाँ पे प्रभुलिंगेश्वर FPC, ये तेरदल जो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ की एक FPC है। अब बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के जो उनके 500 सदस्य हैं उनको जब भी अपना जो प्रोड्यूस बेचना हो तो मेनली जब वो हल्दी बेचते हैं, टर्मरिक, तो उन्हें सांगली जाना पड़ता है जो कि एक 80-90 किलोमीटर है।
उसके लिए उनका खर्चा देखिए कितना होता है कि वो 120 रुपया प्रति क्विंटल तो उनको फ्रेट देना पड़ता है आने जाने के लिए। और उसके बाद मार्केट पहुंचने के बाद, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो फार्मर मार्केट आ गया है वो उस माल बेचे बगैर जाएगा नहीं, उनको कम से कम 2 से 3% ब्रोकरेज आड़तिया को देना पड़ता है और उनका भाव भी उनको ठीक से नहीं मिलता है। तो पिछले ही हफ्ते हमने एक बहुत ही अच्छा ट्रेड किया है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिसमें 2.5 टन टर्मरिक कृषि वेद नाम का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पे प्रभुलिंगेश्वर एफपीसी ने बेचा। अचरज की बात यह है कि खरीदने वाली सामने की संस्था भी एक कोऑपरेटिव ही थी, जो कि सांगली की विष्णु अन्ना सहकारी खरीदी बिक्री संघ है। अब इसमें आपने जो बात की उसका एक डायरेक्ट जैसे हम कहेंगे लाइव एग्जांपल हो गया, क्योंकि जो भाव मिला एफपीसी को वो तकरीबन 12% ज्यादा था और जो बचत हुई उनकी खर्चे में वो आने जाने के खर्चे में बचत हुई, 2 से 3% ब्रोकरेज बचा। तो कुल मिला के ये 20% जो आपने बात की ये एक्चुअल रियलाइजेशन होता है। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक बहुत अच्छी ट्रेड थी और इस संबंध में आपने जो सवाल किया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एनईएमएल एक स्पॉट प्लेटफॉर्म के रूप में पिछले 10 साल से काम कर रहा है। हमारा शुरुआत का काम सरकार के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से हमने प्राइवेट स्पेस में इसको काफी बढ़ाने की कोशिश की है। 2021 के वित्त वर्ष में 440 एफपीओ हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हुए। इस साल 565 रजिस्टर हुए। पिछले साल ट्रेडिंग करीब 1 करोड़ के सौदे हमारे प्लेटफॉर्म पे हुए और इस साल वो दुगने हो चुके हैं। 320 से ज्यादा ट्रेड्स हो चुकी हैं और उसका 1000 मीट्रिक टन और जिसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो इस प्लेटफॉर्म की 2-3 जो खासियत है मैं संक्षिप्त में बता दूं। एक तो इसमें प्राइस डिस्कवरी जो हम बोलते हैं वो एफिशिएंट होती है कि फार्मर को जो प्राइस मिलना चाहिए वो वाजिब दाम मिलने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा, और ये चीज जो हमारे लिए सबसे कठिन है वो ये कि हमारे प्लेटफॉर्म पे हम बायर और सेलर दोनों से मार्जिन लेते हैं। इस कारण, क्योंकि जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इस ट्रेड में नहीं तो ट्रेड कंप्लीट ना होने की आशंका रहती है, तो बायर और सेलर दोनों को ये विश्वास हो कि हमारी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए हम दोनों तरफ से मार्जिन लेते हैं। हमारे लिए ये सबसे कठिन काम है क्योंकि बहुत बार सेलर यही बोलता है कि मैं जब माल दे रहा हूं तो मैं मार्जिन क्यों दूं। और इस सब को देखते हुए आपने जो प्रश्न रखा कि हाउ डू वी स्केल इट अप, व्हाट आर द 2 और 3 बिगेस्ट चैलेंजेस। सबसे पहला चैलेंज जो हम देख रहे हैं एफपीसी में आ रहा है वो ये कि हालांकि ये फायदे सबको दिख रहे हैं, किसान यही सोचता है कि मुझे मेरा माल देते ही पैसा मिलना चाहिए और एफपीसी को जब तक सामने बायर ना हो वो पैसा नहीं दे सकते हैं। तो हमने इसमें काफी विचार विमर्श भी किया है और हालांकि हम सब जानते हैं कि अमूल का एक उदाहरण जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, उसका कोई अलग सा नमूना यहाँ पे लाना चाहिए। और मैं इसका एक संक्षिप्त में बताऊं तो एफपीसी को इस तरह की कोई फंडिंग की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि वो कुछ वाजिब, जिसे हम फ्लोर प्राइस की तरह फार्मर को पहले दिन दे सकें और जब एक्चुअल सौदा हो जाएगा तो बचा हुआ पैसा दे दें। और ये जो इंटरिम फंडिंग है इसके लिए कहीं ना कहीं से नाबार्ड जैसी संस्थाएं हैं, इनको सोचना चाहिए कि एफपीसी को कैसे करें, क्योंकि एफपीसी अगर प्राइस रिस्क लेने लगा कि वो किसान से एक भाव पे ले ले और सोचे कि वाजिब दाम में बिक जाएगा, तो वो ट्रेडिंग करने लगेंगे और वो शायद उनके लिए हानिकारक हो। तो इसीलिए, क्योंकि हम कोई नहीं चाहते हैं कि एफपीसी ट्रेडर्स बन जाएं, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे देश में बहुत ही अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं। हमारे साथ एक स्पीकर भी जुड़े हुए हैं ओलैम से, ऐसी बड़ी संस्थाएं वो खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन एफपीसी ट्रेडिंग करने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है। दूसरा हम जो देख रहे हैं वो फार्म हेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। अब पिछले साल सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नाम का जो फंड एस्टेब्लिश किया है, ये बहुत ही एक अच्छी सुविधा है। फिर से 2 करोड़ तक का 5% ब्याज पर एक ऋण किसान या एफपीओ को मिल सकता है जिससे कि वो फार्म हेड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2 चीजें अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, फार्म हेड इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा इंटरिम शॉर्ट टर्म फंडिंग फॉर द एफपीसी टू फैसिलिटेट द ट्रेड, तो इससे एफपीसीज का बहुत अधिक प्रमाण से इस प्लेटफॉर्म पे आना वाजिब हो जाएगा, मुनासिब हो जाएगा।
हमारी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमने कैसे एफपीसीज को ऑनबोर्डिंग किया जाए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे सरल की जाए। जैसे मैंने बताया पिछले साल 440 किए थे, अब 575 किए हैं। अगले साल का टारगेट बहुत ज्यादा रखा है हमने हमारी टीम के लिए, और चाहते यही है कि 1000 से ज्यादा एफपीसीज हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। लेकिन ये दो चीज अगर सुधर जाएंगी तो मेरे ख्याल से एफपीसीज के थ्रू होने वाली ट्रांजैक्शंस और जो मैंने 20% एक्चुअल हम देख रहे हैं कि बचत हुई है लोगों की, इसको आप बचत बोलिए या फायदा बोलिए, क्योंकि किसान का फायदा हुआ है, किसी की बचत हुई है। ये दोनों चीजें जरूर होती हुई दिखती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो आपने फंडिंग की बात की वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरिम अरेंजमेंट अगर हो जाएगा तो बायर और सेलर के बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो और बेहतर हो सकता है। और मुझे लगता है कि नाबार्ड की ओर से इस दिशा में जरूर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, जिससे जो एफपीओ हैं उनके लिए अपने माल को बेचने में काफी सहूलियत हो। मिनल, कैन वी टेक 1 or 2 क्वेश्चन? डू वी हैव टाइम? Sir, maybe two, and 2 just try to questions. wrap up. Thank you, sir. So anyone who is जो हमारे एफपीओ जो इस जुड़े हुए हैं इस आयोजन में, वो चाहे तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिनल, would you like to coordinate for that? Sure, sir. May we please quickly have some questions coming up in the notes for us so that we may quickly take them? Okay, so I will take इसमें अगर कोई सवाल है, अभी तक कोई सवाल जो मुझे चैट में दिखा नहीं है, अगर कोई पूछना चाहे तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या वो इस माध्यम से जुड़ करके भी पूछ सकते हैं। जी। एक सवाल जो आया है, नहीं ये सवाल नहीं, ये तो रजिस्टर की ही बात है। हाउ डू वी रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म? ये एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगता है। ये किस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है? शायद ये मेरे ख्याल से ये एक अलग सवाल है। कोई सवाल जो पूछना चाहे हमारे एफपीओ से जो लोग जुड़े हुए हैं? सुशील जी, ये सवाल मैं लेना चाहूंगा एक्चुअली। जी। तो जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कृषि विकास को, और कृषि विकास मोर देन 100 एफपीओ के साथ काम कर रहा है। साथ ही हम एक इनिशिएटिव चला रहे हैं ऑल अबाउट एफपीओ, जो नेशनल लेवल पे हम एफपीओ को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस ऑल अबाउट एफपीओ इनिशिएटिव के माध्यम से ये जो सवाल है कि किस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। वो सारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए और एंटायर वैल्यू चेन में, इवन कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ एफपीओ, एफपीओ रजिस्ट्रेशन, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनको जोड़ना, मार्केट लिंकेज, ये सारी चीजों पे ऑल अबाउट एफपीओ प्लेटफॉर्म एफपीओ को सपोर्ट करता है। तो ये जिनको भी सवाल है या बाकी सारे एफपीओ भी सुन रहे हैं, उनको अगर सपोर्ट चाहिए तो वो हमारे ऑल अबाउट एफपीओ हो सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, वहां पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू। ओके, और इसमें और अगर मैं स्पष्ट कर दूं, मृगांक सर, आपके लिए ये आप अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें, जो एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म है वहां पर कोई एफपीओ रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? तो देखिए, हमारे दोनों संस्थाएं जो हैं, एनसीडीएक्स जो है वो वहाँ पे वायदा बाजार होता है, और एनईएमएल जो हमारी संस्था है वहाँ पे हम लोग जिसे स्पॉट मार्केट बोलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होता है। दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, क्योंकि एनसीडीएक्स पे जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए सेबी की जो मान्यताएं हैं उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन दोनों में हमारी टीम्स हर जगह मौजूद हैं। अगर किसी को कहीं पे रजिस्ट्रेशन करना है तो हमारी वेबसाइट्स पे, एनईएमएल की वेबसाइट और एनसीडीएक्स दोनों की वेबसाइट पे दिया हुआ है कि सबसे नजदीक कहाँ पे वो किसी को संपर्क कर सकते हैं। और सीआईआई से हम जुड़े ही हुए हैं, तो अगर किसी के थ्रू भी हमें कोई लीड मिल जाती है तो आज इस समय हमारे एनईएमएल के लोग 80 जगह पे हमारे अपने लोग स्थित हैं, और वो 80 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे कोई अच्छी बड़ी मंडी है। तो ऑन दी ग्राउंड प्रेजेंस हमारा 80 जगह पे ऑलरेडी है। कहीं पे भी कोई एफपीसी रजिस्टर होना चाहता है तो हमसे संपर्क कर लें, हमारे लोग उन्हें तुरंत कांटेक्ट करेंगे। ओके, मिनल, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? और देयर इज वन मोर क्वेश्चन। अगर ओलाम से अगर हम ये जानना चाहें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन सी ऐसी जियोग्राफीज हैं जहां पर आप काम कर रहे हैं, मिस्टर चंद्रशेखर प्लीज। हम अभी फिलहाल चावल में काम करते हैं इन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना,
स्पाइसेस में काम कर रहे हैं हम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वी आर इन गुजरात, राजस्थान में भी हम लोग काम कर रहे हैं। कॉटन में हम लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं। तो हमारा प्रेजेंस जो है इन कमोडिटीज में कई सारे स्टेट्स में है। सो आई वुड से लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि हर एक कमोडिटी अलग अलग प्रदेश से आता है, तो हमारी जो प्रेजेंस है इन अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। Okay. So बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you to each and everyone. We have already overshoot the time. So it's time now to close this session. So Amit sir, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए. Mani sir, thank you very much. Chandrasekhar sir, thank you very much. And Mrigang sir, thank you very much. So with this, we close this session and I hope कि यहाँ पर जो कुछ भी बातचीत हुई है, जो हमारे एफपीओ इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनको जरूर मदद मिलेगी और उनके लिए एक रास्ता खुलेगा कि वो अपने उत्पाद को सही समय पर और कम से कम लागत के जरिए कैसे बेच सकते हैं। सो आभार, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। Thank you. As Mr. Sinha takes this opportunity of thanking the entire eminent panel, यहीं पर मैं एक मौका लेती हूँ आपको धन्यवाद अर्पित करते हेतु, Mr. Shishir Sinha, for moderating this session with such enthusiasm and energy, and also our thanks to Mr. P.K. Swayam for joining in. A gratified gesture to entire eminent panel for steering this session. Thank you very much. We right away join into another session, awaiting to discuss about various financial inclusion question and answers. Thank you very much. Thank you.